Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. First, we'll start with the derivative and technical updates. On the technical front, yesterday Nifty witnesses selling pressure near its previous day high. So basically, selling pressure at higher levels and closed with a loss of 0.34%. On the sectorial front, media and Nifty metal were the top gainers, while PSU Bank and Reality were the top losers. So ahead of IDBI meet, we can observe volatility in the market. So approach is cautious. So overall, the chart pattern is a positive. But today is a weekly expiry in RBI meet. So if profit booking continue, then 18,000 and 17,800 levels will act as a support levels. And any decline should be used to enter a stock specific long trades. On the bank Nifty front, yesterday bank Nifty open and high level was almost same. So due to that, Bank Nifty traded with a negative momentum yesterday. So if you see on the daily chart, Bank Nifty forming a lower high low formation compared to its previous session. But the Bank Nifty is still trading above the trend line breakout level, which is a good sign. So now 14,800 and 14,400 will act as a support level. And 41,800 and 41,900 will act as a resistance levels for the Bank Nifty. On the derivative front, Nifty future witnessed a long unwinding, which is around minus 6.1%. So addition of 12.67 lakh shares. PCR also saw a decline from 1.31 to 1.13. So major addition happened in the call option front at 18,500 to strike 77.83 million shares and 18,400 call by 79.30 million shares. On the put option front, major addition were seen at 18,000 and 18,100 put. Bank Nifty witnessed a yesterday short buildup of the around 2.6%, which was the addition of 21.35 lakh shares. On the Bank Nifty front, a major addition in the call option were seen at 41,500 call, 37.25 million shares, and 41,300 call option strike, 18.82 million shares. And on the put option front, major addition was seen at 41,000 put by 18.33 million shares. Long build-up were seen at Polycap, Coal India and Dr. Reddy, and short position were witnessed at LIC Housing Finance, Chambal Fertilizer and Titan. On the FII data front, FII sold minus 7,049 contracts and overall net long by plus positive 38,132. So net long short ratio is at 65%, which is a good number. Then on the cash option front, FII buys the 1,436 and DI sold 1,378. So that's it from my end. Now I will hand over to Archana ma'am for the research update. Thank you and over to you, ma'am. Thank you, Kshitija. Good morning, team. So, a few updates from my side, starting with Wipro. The company has launched a new financial services advisory capability in India named Capco. So, this will capitalize on the Wipro's presence in Indian financial services sector through its business in Mumbai to jointly offer end-to-end transformation services for the sector. So, this comes as a positive development for Wipro. We have a hold rating on the stock with a target price of 425. On Adani Transmission, the board has granted the in-principle approval for issuance of non-convertible debentures worth rupees 1,500 crore, a positive development for Adani Transmission. On Triveni Turbine, the board has approved the proposal for buyback of equity shares worth rupees 190 crore through tender offer route at rupees 350 per share, representing 1.6% of the total shareholding of the company. On JK Cement, the subsidiary of the company has successfully commenced the cement grinding capacity of 2 million tons per annum. It's a newly set up cement manufacturing facility at Madhya Pradesh, and that is like a positive development for JK Cement. On SIS, the company has reported 4.8% YOY decline in consolidated profit at 67 crores for this quarter, and which was impacted by the weak operating performance and the margin compression. The revenue for the quarter increased by 14% YOY to 2,768 crores, while EBITDA came in at 109 crores, fell by 10% on YOY basis. On Nilkar, the company has reported 262% YOY increase in the consolidated profit at 12 crores for this quarter.
which was supported by the top line as well as operating performance. The revenue came in at 328 crore, which is about 38% on same quarter last year. On Jindal Stainless Steel, the company has reported a significant 63% YoY decline in consolidated profit at 151 crore. And it was impacted by the higher inventory, power and fuel cost and the other expenses, while the revenue grew by 11% to 5,600 crores. Subdued numbers may be like being on the stock price of Jindal Stainless in near term. On KSB, the company has recorded almost flat profit on consolidated basis at 39 crore for the quarter ended this year. While this was impacted by the margin compression and the higher input cost. The revenue for the quarter came in at 431 crore, increased by 17% on YoY basis, while the EBITDA margin declined by 146 bips to 12.5% for this quarter. On Dalmia Bharat, the company has registered 74% YoY decline in consolidated profit at 56 crore, and this was impacted by the higher power and fuel cost and the freight charges. While the revenue for the quarter grew by 15% to 2,900 crores, while EBITDA fell by 39% YoY to 380 crores. On Jamna Auto, the company reported below our estimates numbers on all parameters. The revenue for the quarter grew by 57% YoY on the back of MHCV volume growth of 44%. However, the revenue were flattish on QoQ basis. EBITDA margin for the quarter declined by 250 bips and stood at 10.2%, while the PAT for the quarter expanded by 38% and flattish on QoQ basis. Currently, we have hold rating on the stock with a target price of 126. On Kajaria, the company reported the numbers yesterday, and that was followed by the earnings con call with the management. The company had another quarter of subdued margins. The Q1 was impacted by the fuel cost, and the same thing has happened on even the Q2. The management sounded pretty optimistic on the volume part, but we are slightly cautious when it comes to the NSR. Given that the prices have increased, the operating cost has gone up pretty substantially. It is not that easy to push up the same price cost to the customers, and that will weigh on the margins of the company for FY23. We have cut our estimates for this year and slightly trimmed the estimates for FY24. But given that the stock has beaten down recently, and that gives comfort on the valuation front, we maintain buy rating on the stock with a target price of 1254. On JK Paper, the company reported the best ever quarter in the history of JK Paper since listing. On the all parameters, maybe your top line margins, the company has reported sales of 1,600 crore, which is up by 74% YoY, and that was led by your higher volume as well as a better realization. EBITDA margin stood at 32.8%, which is up by 950 bips YoY, while the net profit came in at 360 crore. When I look at JK's number, on all the parameters, the company has given the best ever performance, and that should reflect in the substantial price increase, the stock price increase in near term. We remain bullish on JK Paper. We'll try to speak to the management, and post that we'll come out with a detailed note and upgrade our target price. And lastly, on Relaxo, the company reported their Q2 numbers. The numbers were slightly subdued. Net sales was up by 6%, while EBITDA PAT were down by 25 to 36% to our estimates. Net sales declined by 6% YoY to 670 crores, while the EBITDA declined by 49% YoY to 59 crores. While EBITDA margin declined by almost 740 bips to 8.9%. The company is hosting the call today and will interact with the management. Currently, we have hold rating on the stock. There is very sharp increase in the raw material prices for most of the companies, and that is weighing on the margins of these companies. So we need to see what the management has to say going forward. So that's it from my side. Now I request Brijesh to take it from here. Thank you, and over to you, Brijesh. Thank you, madam. The few more news updates from my end. To start with, there was a news on the tax cut on the crude oil. The government on Tuesday has suggested that the local exporter we produce the crude oil to the 9,500 per ton from rupees 11,000 has been cut down to
it's been increased. Actually, it's been increased by 5 rupees per liter and to 3 rupees over 3.5 rupees per liter in the ATF fuel. Next is on NCC. So NCC has received 2 new orders of rupees 1056 crores in October 22. All these orders are related to water and environment division and is received from the state government agency. One more is on Bharti Airtel. So the Bharti Airtel has surpasses 1 million customers uh, of its 5G network. The company has said it has achieved this milestone in less than 30 days from the date of its launch. So this would be a positive for the Bharti. Infosys has come up with the next generation digital service and consulting, and Microsoft today will announce is also going to announce the successful immigration of the Spark corporate function to the Microsoft Dynamic 365. So this would be a little bit positive for the Infosys. There are a few results today to watch. They are HDFC Limited, Hero MotoCorp, HPCL, Vodafone, Adani Enterprises, Ajanta Pharma, Amara Raja Batteries, Adani Wilmar, Bank of India, Blue Star, Devyani International, Indian Bank, JK Lakshmi Cement, Raymonds, SRF, and Welspun Com. So these are the news which are going to be there today. So we always say we have to be cautious with the stocks 2 day before and 2 day after. Plus this, the stocks which are in ban are LIC Housing Finance and PNB. So that's all from my end. I will hand over to Hitendra for the updates. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. स्टार्ट करेंगे विप्रो से. विप्रो ने कहा है कि उन्होंने नई फाइनेंशियल सर्विस एडवाइजरी लॉन्च की है जो कि कैपको करके है. कैपको ये है कैपिटलाइज करेगी विप्रो की बिजनेस जो भी इंडियन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में है और ये बेसिकली मुंबई में सेटअप होगी और ये एंड टू एंड ट्रांसफॉर्मेशन करेगी सर्विसेज सेक्टर में. सो विप्रो और कैपको जो है स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ऑफर करेगा डिजिटलाइजेशन जर्नी के थ्रू और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि विप्रो के लिए. करंटली अगर देखा जाए तो विप्रो का रेवेन्यू बीएफएसआई सेगमेंट से 35% तक आ रहा है. सो एक ये पॉजिटिव है. सो वी हैव करंटली इसके ऊपर हमारी होल्ड रेटिंग है टारगेट प्राइस 425 के साथ. सेकेंडली देखेंगे अडानी ट्रांसमिशन को इन अप्रूवल नॉट बन गया है कन्वर्टेबल इश्यू डिबेंचर्स करने के लिए जो 1500 करोड़ का है. रेवेन्यू टर्बाइन ने भी बायबैक अप्रूव किया हुआ है जो कि इक्विटी शेयर से 190 करोड़ का और ये टेंडर करेंगे टेंडर रूट से ऑफर करेंगे एट द रेट ऑफ 350% जो कि 1.68% रहेगा टोटल शेयर होल्डिंग का. जेके सीमेंट ने भी कहा है कि उनकी जो सब्सिडी जेके सीमेंट उन्होंने एक सक्सेसफुली कमेंट किया ग्राइंडिंग कैपेसिटी 2 मिलियन टन्स का और ये न्यूली सेटअप प्लांट है पन्ना मध्य प्रदेश में और बेसिकली क्लिंकराइजेशन स्टेज पे है. सो एक कमीशन शॉर्टली हो जाएगी. SIS ने भी देखा गया जो इन्होंने रिजल्ट रिपोर्ट किया गया 1.4% ईयर ऑन निकला देखा कि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट पे जो कि 67 करोड़ का है और अगर इनकी रेवेन्यू देखा जाए तो वो ग्रोथ हुई है 14% से जो कि 2768 करोड़ का. जबकि एबिटा देखा जाए तो 10% से गिराई है जो कि 109 करोड़ के आसपास का. मेलक्रास के भी रिजल्ट देखेगा अगर देखेंगे तो 262% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज दिखा गया प्रॉफिट में जो कि 12.25 करोड़ के आसपास का है और टॉप लाइन को सपोर्ट किया रेवेन्यू जो कि 328 करोड़ का जो कि 37% का ग्रोथ देखा गया है. जिंदाल स्टेनलेस के भी नतीजे देखेगा कंपनी में 63% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन दिखा गया है जो कि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है 151 करोड़ का और अगर हम रेवेन्यू देख रहे हैं तो 11.5% से ग्रो हुआ जो कि 5,604 करोड़ का है. केएसबी के भी नतीजे ऑलमोस्ट फ्लैट थे. प्रॉफिट देखा जाए तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे 40 करोड़ के आसपास का है और जबकि लास्ट टाइम भी उतना ही सेम था और बेसिकली मार्जिन कंप्रेशन के चलते और हायर इनपुट कॉस्ट के चलते ये प्रेशर देखा गया. रेवेन्यू देखा जाए तो 431 करोड़ का जो कि 17% का जंप देखा गया है और एबिटा मार्जिन देखा जाए तो 150 बिप्स से नीचे गिरा है जो कि 12.5% के आसपास का है. डालमिया भारत के भी नतीजे देखे गए 74% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखा गया कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में जो कि 56 करोड़ का है. बेसिकली इसकी जो हाई पावर और फ्यूल कॉस्ट के चलते और फीड चार्जेस के चलते ये डिक्लाइन देखा गया प्रॉफिट में और रेवेन्यू देखा जाए तो 15% से ग्रो हुआ जो कि ईयर ऑन ईयर 2971 करोड़ का है. और एबिटा देख रहे हैं जो कि 39% से फॉल हुआ है जो कि 379 करोड़ का है. वॉल्यूम देखा जाए तो राइज देखा गया 13.7% से जो कि 5.8 टन का है.
जमुना बजाज ऑटो की भी रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट हमारे नतीजे से कम ही थे सारे पैरामीटर्स पे। रेवेन्यू देखा जाए तो 57% ग्रो हुआ ईयर ऑन ईयर, जो कि एमएचसीवी वॉल्यूम से मेजर को हेल्प मिली है। 44% का जंप देखा गया है क्वार्टर क्वार्टर पे। एबिटा मार्जिन देखा जाए तो क्वार्टर पे डिक्लाइन हुआ है 250 पिप्स, जो कि 10.2% है। और अगर पैट देखा जाए तो उसमें हमें एक्सपेंशन देखा है 38% का, बट अगर ईयर ऑन ईयर पे बट फ्लैट है क्वार्टर क्वार्टर पे। सो पैट के एस्टिमेट्स देखते हुए करंटली हमें इसके ऊपर होल्डी रेटिंग है, टारगेट प्राइस 126। कचरे सिरेमिक के भी नतीजे अगर मार्जिन देखे जाए तो सबड्यूट थे, क्योंकि हायर गैस प्राइस के चलते इनको प्राइसिंग प्रेशर बहुत ही रहा उसमें। बट हाँ, रिजल्ट्स हमारे इनलाइन ही थे एस्टिमेट्स के हिसाब से। नेट सेल फ्रेंड्स और थोड़ा सा मार्जिन डिसअपॉइंट रहा, बट ओवरऑल जैसे इंडस्ट्री प्लेयर है तो ये हमें लगता है आगे सबड्यूट डिमांड रहेगी इसमें। सो मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि नियर से लॉन्ग टर्म चैलेंजेस रह सकते हैं मार्जिन पे, और डिमांड डायनेमिक्स भी ओवर टू मिड टर्म पर लॉन्ग टर्म हमें लगता है पॉजिटिव रहेगी। सो रीजन देखी जाए तो अगर सेल 10.7% से ग्रो हुई है, जो कि 107 करोड़ की है, और एबिटा देखा जाए तो 120 करोड़ के आसपास का आया हुआ है, 28.3% का है। और अगर हम प्रॉफिट देखे जाएंगे तो 0.7 बिलियन का है, जो कि 42% का राइस देखा गया है। जेकी पेपर्स के भी नतीजे आगे रिजल्ट्स हमारे अच्छे थे, बेस्ट एवर क्वार्टर रिजल्ट्स थे, इन लाइन थे हमारे एस्टिमेट्स के आसपास, जो कि 3.7% है। और पैट भी देखा जाए तो इन लाइन ही था, जो कि 12% के आसपास आया है। एबिटा मार्जिन देखा जाए तो 33% का, जो कि 950 पिप्स का जंप देखा गया उसमें। और एडजस्टेड नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 360 करोड़ का देखा, जो कि 204% का जंप देखा गया है। इसकी कंपनी की नेट डेट देखा जाए तो 28,196 मिलियन की है, जो कि 7.4% का है। सो या और दूसरे अपडेट्स देखेंगे, एमटा टेक्नोलॉजीज के भी नतीजे देखेंगे। नतीजे में देखा है 30% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखा गया है, जो कि 24.5 करोड़ के आसपास का है। और इसमें बेसिकली इनकी टॉप लाइन जो ग्रो हुई है 38.2% की, जो कि 126 करोड़ के आसपास का है। और नेलकास्ट के भी नतीजे देखे गए हैं, जो कि 262% का हमें जम देखा गया ओवरऑल। हाँ, जैसे कि हमने देखा कि एनसीसी को 2 ऑर्डर्स मिले हैं 1056 करोड़ के, और ये 2022 तक ये 2022 में मिले हैं। और ये ऑर्डर्स जो देख रहे हैं, जो कि वाटर एनवायरमेंट डिवीजन से मिले हैं, और ये स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी से मिले हैं। भारतीय एयरटेल ने भी सरपास किए 1 मिलियन 5G कस्टमर के अपने 5G नेटवर्क में। तो कंपनी ने कहा है कि इसे ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, और जो कि लेस देन 30 डेज में हुआ है। इन्फोसिस ने कहा है कि वो एक नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विसेज और कंसल्टिंग फर्म है, जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ अनाउंस कर रहे हैं सक्सेसफुल, जो कि स्मार्ट कॉर्पोरेट फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 के लिए। कल हम देखेंगे जैसे फेड ने कहा है कि रेट हाइक कर रहे हैं, उन्होंने 0.75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया हुआ है, जो कि मतलब और उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन का अभी भी उनके फोकस में रहेगा। सो इसके चलते हमने कल देखा कि ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट है, कि वही हमें इंडियन मार्केट्स में भी दिख रही है। सो एक ये सेंटिमेंटली पॉजिटिव नहीं था उनके लिए भी। So that's it from my end. Thank you everyone for attending the morning call. You may now disconnect.